मॉर्निंग 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 कैसे हैं? बहुत ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। 2 दिन आपने खूब अच्छी तरह से सामने वाले पे आप। हाँ जी, ये हेमिस कॉन्स्ट्री, ये हेमिस वाला है। अभी मेडिटेशन है ना सर, तो आप सीधा जो रोज मेडिटेशन with the legacy of leadership as Mayor of Jammu, Speaker of Jammu and Kashmir Legislative Assembly, and Deputy Chief Minister, efforts of Sri Kavinder Gupta continue to uplift the marginalized communities. He has assumed the prestigious appointment of Honorable Lieutenant Governor on 18 July 2025. On behalf of Lieutenant General Hitesh Bhalla, Uttam Youth Seva Medal, Shaurya Chakra and Bar, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, General Officer Commanding 14 Corps, we welcome you on the 5th and final day of the Military Civil Fusion Capsule 2025. Over the past 4 days, this capsule has fostered deeper engagement between civil and military administration. The Military Civil Fusion Capsule started on 26 August 2025 and has over the past 4 days featured insightful talks, panel discussions, and the cross-establishment visit. It has developed a good understanding between the Army and the civil administration in Ladakh. May I now request Brigadier Sachin Gehlawat, Commander 3RT Brigade, to kindly give a brief on the Military Civil Fusion Capsule 2025. Development of Ladakh through Opsat Bhavna. This was a comprehensive talk was given. In the last, we know that tourism is extremely important for the growth of local economy. So an official from tourism department spoke about why it is important, what can we do to promote tourism, what actions can be taken to enhance tourism, especially in the forward areas, particularly sensitive areas, so that those can be preserved and there is a balance between the ecology and the tourism. Next, there was a request that we need to have some kind of a helpline or certain contacts wherein tourists can contact during emergency. The official also brought out that during forward areas visit, there is a lack of signposting. Very important initiative which has been taken up by the Army, certainly from the instructions, on the basis of instructions from their superiors. But we have been feeling that there was one deficiency here in Ladakh, because in J&K we used to have very frequent interactions with the army authorities and the paramilitary forces, and there was a proper institutional mechanism for doing it. We called it civil military liaison conferences. In the home department there was a very important post called director civil military liaison, which was manned by an officer of the rank of Inspector General of Police, sometimes even more senior people. So this was done in a regular and in an institutionalized manner, because of course when the army, paramilitary forces, civilian administration, they operate in a particular area which we call the AOR, they have certain issues with each other which need to be sorted out. Mostly it pertains to land issues, local issues, maybe sometimes law and order, assistance to the civil power. So this sort of mechanism was missing here. So as has been rightly brought out by the officer just before me, that we need to have an institutional mechanism whereby we meet regularly and frequently to sort out our problems in the broader perspective of security and development of this area as a part of the nation. Tread the path together, which was very, very beautifully enunciated by the Chief Secretary himself. When we look at a little bit of a historical reference, we all are aware that
post the Westphalian Treaty of 1648 is when the nation states were born. Once the nation states were born, bounded by geography and culture, it also gave rise to the frictions, the contestation for power, authority, and influence. Thus, contestations continuously show wars between the nation states. And then we had the World War I and the World War II. Finally, once the World War II ended, the multinational organizations like the United Nations organizations came into being. The number of Bretton Woods institutes came into being, predominantly with the aim. I'll start with these stray dogs. That's your question. Well, we are doing a lot with the Animal Husbandry Department of the Civil Administration, with NGOs, and academia. The Bombay Natural History Society has been assisting us in conjunction with the Animal Husbandry Department in neutering these dogs to bring down the menace or the volatile nature of these feral dogs, which is what is actually troubling us. The recent judgment by the Supreme Court on management of stray dogs in society areas, that has actually brought in a lot of discussion nationally, and we are aware as to how we need to look at these dogs and what is the process involved. So just at the moment, it suffices to say that we are looking at a more humanitarian way of reducing the dog menace, not reducing the dogs per se, but by neutering them over a sustained period of time, we would also be ending up reducing the dog population. Coming on to the army budget being more than the civil budget. Well, army budget is definitely not more than the civil budget in terms of development of Ladakh. So please understand, we are two different entities altogether. We are entrusted with the security of the region, and security is the background music that you hear all the time, without which none of the development is possible. Unless you have that background music going, any kind of development, any kind of new projects, any kind of tourism will not happen. You've seen the days of Sindoor just 2 months back. Moment we went in for the Operation Sindoor, because of the nefarious activities of our neighbor, entire tourism came to a standstill, and it was not restricted to Kashmir. It happened in Ladakh as well. Ladakh also, as a union territory, lost a lot of tourism because the security situation was threatened. Hence, we need to understand, whichever walk of life we come from, whichever part of the government or non-government or elected representatives that we represent today, we need to understand the overriding factor is security. Even the Honorable Prime Minister has said, Sashakt Bharat is what will give us the Viksit Bharat. सेना और नागरिक प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और शिक्षा जगत के साथियों, आज आपके बीच बोलते हुए मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन कैप्सूल लद्दाख के विकास के लिए एक अहम कदम है, ऐसा मेरा मानना है। मैं सेना, नागरिक प्रशासन और लद्दाख विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं, जिन्होंने मिलकर के ये पहल सफल बनाई है। और ये केवल 5 दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश निर्माण के लिए एक नई शुरुआत है। किसी भी देश की ताकत केवल सेना या उसकी अर्थव्यवस्था में नहीं होती, बल्कि दोनों को मिलाकर के उनके काम में होती है। यही फ्यूजन है। लद्दाख में ये और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ की सीमाएं जो है वो संवेदनशील हैं, पर्यावरण नाजुक है और लोग साहस और परंपरा से जुड़े। यहाँ सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती है, बल्कि आपदा में भी समय समय पर मदद करती आई है, गांवों को जोड़ती है, विकास में भी भाग लेती है। और उसी तरह नागरिक प्रशासन में भी सेना के साथ मिलकर ढांचा बनता है और आपदाओं से निपटने की तैयारी करता है और वो समाज को मजबूत बनाता है। सेना ने कठिन इलाकों में सड़कें बनाई हैं, आपदाओं में लोगों को बचाया है और समाज को अनुशासन व सेवा की भावना दी है। नागरिक प्रशासन में शिक्षा, स्वास्थ्य,
ऊर्जा और पर्यटन में काम किया है ताकि विकास दूर दराज के गांवों तक पहुंच पाए, और उसका उदाहरण हम देख भी पा रहे हैं। दोनों मिलकर सुरक्षा और विकास के दो मजबूत इंजन हैं। भविष्य में हमें इस फ्यूजन को स्थायी बनाना होगा। इसके लिए नियमित बैठकें, प्रशिक्षण, नई तकनीक, टिकाऊ विकास पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लद्दाख आधुनिक समाधान का एक मॉडल बन सकता है, जहां सुरक्षा और विकास साथ साथ आगे बढ़े। साथियों, ये फ्यूजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक नई सोच है। सैनिक केवल सीमा का रक्षक नहीं होता, बल्कि विकास में भी पूर्ण तरह से भागीदार होता है। आइए हम सब मिलकर लद्दाख को ऐसा उदाहरण बना करके दिखाएं, जहां सेना और समाज मिलकर राष्ट्र सुरक्षा, तेज विकास और लोगों को सशक्तिकरण की नई कहानी लिखें। लद्दाख के लिए ये सब चीजें क्यों जरूरी हैं? लद्दाख स्ट्रेटेजिक स्टेट होने के साथ ही बहुत मायने रखता है। ये भारत का मुकुट है और रणनीति दृष्टि से बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की हर पर्वत श्रृंखला मजबूती की निशानी है और हर घाटी बलिदान की कहानी कहती है। हमारी सीमाएं संवेदनशील हैं, पर्यावरण नाजुक है, ये मैं पहले कह चुका हूँ। ऐसे माहौल में मिलिट्री सिविल जो फ्यूजन है, केवल लग्जरी नहीं है, बल्कि समय की जरूरत है। यहाँ सेना, जैसे मैंने कहा कि पहले सुरक्षा में ही भाग नहीं लेती, बल्कि पूरी आपदाओं में काम करती है, राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। हमारी सेना सिर्फ योद्धा नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माता भी है। देश की रक्षा के अलावा उन्होंने एकता, अनुशासन को मजबूती दी है। सेना ने कठिन इलाके में जो काम करके दिखाया, वो हम सबके सामने है। लद्दाख के नागरिक प्रशासन ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट, इको टूरिज्म, शिक्षा सुधार और स्वास्थ्य सेवाएं दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई है। यही प्रशासन जनता की आकांक्षाओं की नीति में बदलता है और विकास के लिए केवल शहरों तक नहीं, गांवों तक भी पहुंचता है। सेना और नागरिक प्रशासन मिलकर तकनीक को और नया अंजाम दे सकते हैं। आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो चुनौतियां हैं, फिर भी हमें यह मानना होगा कि फ्यूजन केवल हमेशा आसान नहीं है। कुछ चुनौतियां जिनका हल निकालना होगा। पहला, हमें इस सहयोग को स्थायी बनाना। ये इंटरेक्शन एक बार का कार्यक्रम ना रह करके आगे बढ़े, और इसके लिए हमें सभी को खुद प्रयास करना होगा। मैं तो यही कहूंगा, हमें बनानी है तकदीर खुद अपने हाथों से। खुद अपने वक्त के परिवर्तनकार हैं हम। जब इस प्रकार की सोच लेकर के चलेंगे, तो मुझे लगता है कि लद्दाख खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। और जब सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है, वो जिस प्रकार से लोगों को नई दिशा देंगे, वही दिशा हमारे यहाँ की जनता होने वाली है। मैं आज इस कार्यक्रम पर, यहाँ पर मीडिया खड़ा है, ये भी कहना चाहता कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं लद्दाख के लोगों से भी कहूंगा, बड़ा दिल लेकर के काम करिए। जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रश्न आता है, सुरक्षा का प्रश्न आता है, तो खुद ब खुद सब बातें, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे दूसरी चीजें हो, सब बोनी हो जाती है। इसलिए खास करके जो हमारे दुश्मन हैं, जो बॉर्डर स्टेट होने के कारण से हमेशा यहाँ पर आंख लगा करके बैठे हैं, और हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो सुरक्षा बल हैं, हमेशा उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम सीमाओं का विस्तार नहीं चाहते, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कविता है, ना सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है। ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान सह लेंगे, ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। बसा है नाग बांबी में मगरे छेड़ने वालों, ये मत समझो कि सोई नाग की फुंकार सोई है, ये मत समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इस हिंदुस्तान की सेना ने जो अपना कर्तव्य निभाया है, जो गौरव समय समय पर दिखाया है, उसको हम हमेशा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। वो जो देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, वो सबसे जरूरी है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी ये जो सेना है, जब इकट्ठे मिलकर के आगे बढ़ेंगे, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जो 5 दिन का आपने यहाँ पर
एक संवाद किया है, चर्चा किया है, दोनों तरफ से प्रश्नोत्तर हुए हैं, उसका जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। मैं एक बार फिर से सभी सेना के अधिकारियों का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुला करके एक सम्मान दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय लद्दाख। Mr. Sonam, Mr. Shivang Paljor, Mr. Akshay, Mr. Rigzin Sandhu, Additional SP, Leh District Police Department. Dr. Kashit Hillis, Director, Health Department. Mr. Vikas Kumar, Deputy. May I now request Dr. Pavan Kotwal, Chief Secretary. May I now request Lieutenant General Hitesh Bhalla, Uttam Youth Shri Kavinder Gupta, Honorable Lieutenant Governor of Ladakh.